ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल इज गिवन बाय दिस वेक्टर. सो वेलोसिटी वेक्टर आपको दे रखा है माइनस एक्स आई कैप प्लस 2yj cap minus z into k cap meter per second. Now this is the component of the velocity vector along x-axis, which is minus x I cap. Component of the velocity along the y-axis, which is 2y j cap, and along z-axis आपको दे रखा है minus z k cap. Now if we differentiate this with respect to t, so this is rate of change of velocity vector. इधर आपका आ जाएगा, this we have to differentiate, आपका आ जाएगा minus, this is dx by dt I cap, this is 2 आ गया आपका बाहर, dy by dt j cap minus z का आ जाएगा dz by dt k cap. So this is the acceleration vector. So dx by dt आपका जो component है, so this is along, this is the velocity, तो velocity vector along x axis ये आपका आ जाएगा 2 into dy by dt is the rate of change of velocity, तो ये velocity vector along y axis है j cap, minus this is the velocity vector along z axis which is vz k cap. ओके, इनकी अगर मैं रिस्पेक्टिव वैल्यूज अगर मैं डालूं, तो I have got the values of, this is minus velocity vector along x axis is minus, this is minus x, देखो ये है, this is I cap, प्लस इधर आ जाएगा 2 into velocity vector along y axis is 2y, so this is 2y in j cap, minus velocity vector along z axis is minus z, so this is minus z k cap. Okay, so this acceleration vector becomes x I cap plus 4y j cap plus z k cap. Now we have to find the acceleration at the point. आपको point दे रखा है 1 2 and 4, 1 2 and 4 for points 1 2 and 4, coordinates दे रखे हैं 1 2 and 4. So x is 1, so 1 cap, y is 2, 4 into 2 is 8 j cap, z is 4, so 4 k cap. इसका आपको फाइंड आउट करना है मैग्नीट्यूड. दिस इज अंडर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64, 4 का स्क्वायर 16, 6 4 10, 6 7 8 और एक हो गया 81, अंडर रूट 81 इज इक्वल टू 9. 9 जो है दैट इज द करेक्ट आंसर. मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलेरेशन आपसे पूछा था, तो 9 इज द करेक्ट ऑप्शन हियर.